ദശകം 89 വൃകാസുര കഥയും ഭൃഗുപരീക്ഷണവും. रमा जाने जाने यदिक तव भक्तेषु विभवो न सद्य सद्यं पद्यत्तधिकमद कृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशति तद काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेच्युतिकथां सद्य प्रसादरुषिदान् विविध शङ्करादीन् क्वचेद्विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बद कष्टम् अधीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् शकुनिज सत्तु नारदमेकदा त्वरित तोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तप्त्वा घोरं सकलु कुपित सप्तमदीने शिरच्चित्वा सद्य पुरकरमुपस्थाप्य पुरतः अधिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वेब्रे भवति विमुखानां क्वशुभधीः मोक्तारं बन्धुमुक्तो हरिणपदिरिव प्राद्रवत्सोदरुद्रं दैत्याद्भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलदे पृष्ठदो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तमुद्वीक्ष्य शर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं वडु वडु वपुषा तस्थिते दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाजा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमुनगरो श्यगुलीमङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्या मूढशिरसि कृतकरसोपदच्छिन्नपादं भ्रंशोऽह्येवं परोपासितुरपि जगदि शूलिनो वित्वमेव भृगुं किल सरस्वती निगडवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन्नधिगसत्त्वदां वेदितुम् अयं पुनरदादरादुदितरुद्धरोषे विद्वौ हरे विच्छजिं हिंसिंशौ गिरिजया धृते त्वामगात् सुप्तां रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नदिपदेन मुदितोदितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्य ते च सुदृढं त्वयि बन्धभावाः सारस्वता मुनिवरा ददिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वा च यैकदनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वं निगमनिवहैव दिन्दद्भिरीद्वा सुप्तं विष्णो सच्चित् परमरस निर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुभवनिदा भाग्यनिवकं परीदाभश्रान्ते भवनपुरवासिन् परिव्याजे सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।